I just cried. Let put my headphones on. Actually, yeah. You know why I cried? Because I just saw a reel in which it basically showed my weakness. It was related to parents, how you make them feel proud or how they miss you. Both is not a case for me, which I crave, which I want them to experience at least once in their lifetime, in my lifetime. So, yeah, that's why I cried. Okay, let's continue the course. I'm sharing my screen. Output variables. These variables can be used to store the value of an expression in Terraform. For example, let us go back to the configuration file that we used in the previous lecture. We already know that the random pet resource will generate a random pet name using the attribute called ID when we apply the configuration. To save this ID in an output variable called pet name, we can create an output block like this. The syntax used to create this output block is the keyword called output followed by the name that we want to call this variable. Inside this block, the mandatory argument for value is Someone is watching my live. एक रेलवे ट्रैक है मेरे बिल्डिंग के बगल में की आवाज आ रही होगी the reference expression. We can also add a description, which is an optional argument to describe what this output variable will be used for. Once this block has been created, when we run Terraform apply, we can see that the output variable is printed on the screen. Once the resource has been created, we can also make use of the Terraform output command to print the value of the output variables. The command Terraform output by itself will print all the output variables defined in all the files in the current configuration directory. We can also use this command specifically to print the value of where we can make use of these output variables. We already saw that dependent resources can make use of reference expressions to get the output from one resource block as an input to another block. As such, output variables are not really required here. The best use of Terraform output variables is when you want to quickly display details about a provision resource on the screen, or to feed the output variables to other IAC tools such as an ad hoc script or Ansible playbook for configuration management and testing. Now, let's head over to the hands-on labs and practice working with output variables. time to practice so this is my third day
studying for Terraform, and let's see if I can complete this course during this weekend. Because we don't have much in this course, we are on section 4 right now, and we have 10 more sections, more like 8 more sections. Okay. So these are the empty resources except for two random teachers. ठीक है. He left. And I thought no one was watching my stream. Okay. I was so scared. Okay. Which provider is used by the configuration file in this directory? Which provider is used? TLS, separator, time, random. We have random here. Yes. Who is Saurabh Kumar? It's okay. Someone was watching. I should stop talking and get back to my lesson. Which two resource types are configured in the configuration files? UID random integer. We also defined a few output variable in the output variable. Okay.
So these are random. So it was defined when it introduced. So it was not added here, but for the empty, we are adding. It's getting good now. Zero subscribe, zero viewers. What is the value of output called? Variable for every two. ठीक है ना भाई कुछ ज़्यादा आसान नहीं दे रहे हो What is the output value of the output variable called order 1? Order 1 was first random 52168. We have a new config directory located under path output. So first it will create a resource, my pet, that would be random, and then we can check from the variable file. It's expecting length 1, and the pet name would be the random string. Okay. Name is equal to squid. I think it was a child who joined my live. He messaged, he was expecting something else, or he was maybe not interested in Terraform, which I'm streaming, so he left. He even deleted his comment. Yeah, we must. We have just updated the. Please ignore my speaking. What what I am speaking because I know I'm messing today. We have just updated the main.tf file in this directory with a new resource block. Okay, yeah. एक local file add किया है. Welcome now. आपका. Okay. Add a new output variable with the following specifications. इसको variable चाहिए output के लिए. Okay. आउटपुट वेरिएबल के लिए तो output.tf होता है. Can we just define it here? यहाँ पे तो है pet. ठीक है. Output variable welcome message content अच्छा इसमें होता है value description
ठीक है. Who would have thought? Who would have thought? Simple configuration files using HCL, declare and use variables, use reference expressions, and link resources together. Now, let's get introduced to Terraform state and see what really happens under the hood when we run Terraform commands to provision infrastructure. Before we understand Terraform state, let us see the Terraform workflow once again. We have a configuration files in a directory called terraform-local-file. The main Terraform configuration with the resource blocks is defined in the file called main.tf. The variables used are defined inside the file called variables.tf. At this point, we do not have the local file resource created. First, we'll run the terraform init command to download the necessary plugins. Next, we can generate the execution plan by running the terraform plan command. The very first line that is printed when we run this command shows that Terraform tries to refresh the state in memory prior to the plan. Since it's the first time we are running the Terraform plan command, there will be no details related to state printed, therefore implying that there is no state recorded at this moment in time. From this, Terraform also understands that currently there are no resources provisioned based on the configuration files, and then creates an execution plan of create. Moving on, let us now run Terraform apply. This command also tries to refresh the in-memory state, finds that there is no state recorded. Wait. My ADHD brain was thinking something else. I need to start over. We have a configuration files in a directory called terraform-local-file. The main Terraform configuration with the resource blocks is defined in the file called main.tf. The variables used are defined inside the file called variables.tf. At this point, we do not have the local file resource created. First, we'll run the terraform init command to download the necessary plugins. Next, we can generate the execution plan by running the terraform plan command. The very first line that is printed when we run this command shows that Terraform tries to refresh the state in memory prior to the plan. This time I have. Since it's the first time we are running the Terraform plan command, there will be no details related to state printed, therefore implying that there is no state recorded at this moment in time. From this, Terraform also understands that currently there are no resources provisioned based on the configuration files, and then creates an execution plan of create. Moving on, let us now run Terraform apply. This command also tries to refresh the in-memory state, finds that there is no state recorded at the moment, and then proceeds to create an execution plan. Once confirmed, Terraform creates the local file resource as expected. Terraform creates a unique ID for the resource as seen in the command output. And as expected, we can see that the file has been created with the content that we provided. Now, what will happen if we run the Terraform apply command again? Terraform knows that a local file resource by the name of pet and the same ID that we just saw already exists, and it takes no further action. So how does Terraform know that? How does it know that the local file resource already exists? To understand that, let us check the contents of the configuration directory again.
We can now see that there is an additional file called terraform.tf_state created in this directory. This file is called the Terraform state file, which was created as a consequence of the Terraform apply command that created the resource in the first place. This file is not created until the Terraform apply command is run at least once. The state file is a JSON data structure that maps the real-world infrastructure resources to the resource definition in the configuration files. If we inspect the contents of this state file, we can see that it has the complete record of the infrastructure created by Terraform. In this case, we have a single resource of type local file and a logical name called pet. The details such as the resource ID, provider information, and all the resource attributes are stored within this file. It contains every little detail pertaining to the infrastructure that was created by Terraform, and it uses it as a single source of truth when using commands such as terraform plan and apply. If we make a change to the configuration file now and rerun the terraform plan or apply command, Terraform by default refreshes the state again and compares it against the configuration file. It now knows that the resource argument called content has a different value in the configuration file as compared to the Terraform state and the real world. The configuration value uses the string "we love pets" for the content argument, but the state file record shows that the actual content in this file is "I love pets." And as a result, Terraform knows that the resource must be recreated, and when we run terraform apply, it updates the state file as well. From the output of the apply command, we can see that the older local file resource with the older ID is deleted and replaced with a new resource with a completely different ID with the updated content. The same can be seen in the Terraform state file as well. It no longer has a reference for the older resource ID and now has the details recorded for the replaced file resource. At this point in time, the configuration file and the state file Do I have option to share with? Okay, audio is already getting shared.
आई वन क्वेश्चन. अगर एक स्टेट फाइल है, मल्टीपल लोग रन कर रहे हैं, तो मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जब से मैंने एक जगह से रन किया और दूसरी जगह से रन किया, तो लॉक का इशू आता है कई बार. नहीं तो एक वियर्ड सा भी एरर आया था कि रिलेटेड टू लॉक ही था वो. बट फिर वो मैनेज कैसे होता है, वो कैसे स्टोर करता है टेराफॉर्म स्टेट फाइल उस चीज़ को, किस वाली वैल्यू को कंसिडर करेगा वो, क्या वो उस प्रोसेस में फाइल काइंड ऑफ करप्ट हो सकता है. करप्ट तो नहीं कहेंगे, बट होता है ना कि प्रीवियस स्टेट का भी नहीं है, करंट स्टेट का भी नहीं है. क्या होता है एग्जैक्टली, क्या प्रोसेस है, ये है मेरा क्वेश्चन. ठीक है, लेट्स सी. कोर्स में आगे भी है, कंसिडरेशन भी है, जो कि छोटा सा वीडियो है. लेट्स सी. Which location is the Terraform state file stored by default? Which option should we use to disable state? Refresh is equal to false. Eh? Oh, we cannot disable state. ठीक है. Which format is the state file stored in by default? JSON. ओह, YAML क्यों लिखी? YAML तो कोई लॉजिक ही नहीं है इसका. Which of the following commands does not refresh the state in it? What is the name of the state file that is created by default? Terraform.tf state. Navigate to the configuration directory, flash, under projects. Okay, project flash. We have created a few configuration files here. The directory has been initialized and the provider plugin downloaded inside Terraform directory. ठीक है. There is no Terraform dot state file created. Why is that? Because हमने सिर्फ init किया है, plan नहीं किया है. हैं? अप्लाई के बाद क्रिएट होता है. अच्छा, और रिफ्रेश करता है. अच्छा, run the terraform show command and identify the id created for the resource called speedforce. ठीक है, ये हमारा main dot tf है. हमें क्या बताना है? आईडी बताना है. ठीक है, तो terraform I'm assuming कि टेरा init किया है. Let's try plan directly because they claim that init किया है. ठीक है, 4 to add. ठीक है, id स्पीड फोर्स के लिए बताना है. स्पीड फोर्स हमारा स्पीड फोर्स EB8B. आईडी तो दिख रहा है. ये ऑप्शन में क्यों नहीं है?
भाई ऑप्शंस तो कुछ मैच ही नहीं कर रहा है। नो स्टेट, हमको तो दिख रही है स्टेट फाइल। इसमें फ्लैश देखते हैं, अगर स्पीड फोर्स देखते हैं, आईडी तो दिख रही है। ओह, हा 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 हा, ठीक है, हमने अप्लाई कर दिया था पहले ही। ओह स्टूपिड एम आई। ये है हमारा भी। I see what you added. क्यों आ रही है? मैं तो लेट से उठी हूँ। We have just added a new config file under, हाँ देखा मैंने, into this configuration directory and provision the resources. These are AWS resources. हाँ दिख रहा है मुझे, instance है, S3 bucket है. Okay, I'm not scared at the point. Nasty girl, nasty, I've been a nasty girl, nasty. तो इसके अकॉर्डिंग ये दो फाइल और ऐड, दो रिसोर्स और ऐड किया, देव सर्वर, जिसमें हमने पास किया एक एमआई और इंस्टेंस टाइप पास किया, और ये इंस्टेंस क्रिएट कर रहा है। इंस्टेंस क्रिएट करने वाले फंक्शन का नाम है देव सर्वर, मतलब उस इंस्टेंस का नाम ही है देव सर्वर। ठीक है, उसका डिटेल हमारे पास है। फिर दूसरा है S3 बकेट। ठीक है, गॉट इट। अभी हमको आईपी बताना है इसका, प्राइवेट आईपी। आईपी है ये, उपसी। ठीक है, हम ऐसे ही देख के बता देते हैं। 10 to 14 to 30. Where is this fulfill? Soon be working with AWS services and deploying resource on AWS with Terraform. Okay, I'm excited. Mark is complete. I've been a nasty girl, nasty. I've been a nasty, nasty, nasty.
50 क्या करता है? मिरर भी होता है जिसमें
The more that you read, the more things you will know. The more that you will learn, the more places you'll go. Dr. Seuss. Seuss. Seuss or Seuss? Dr. Seuss. Susie. Dr. Seuss. Okay. Which command can be used to create a visual representation of our Terraform resources? Graph. We have created a config directory. Shazam. ठीक है, project Shazam. The config file inside will be used to create a RSA file. Okay, this is our config file. ये RSA file generate कर रहा है, ठीक है, and a private key and RSA, ठीक है. Then a certificate signing request or a CSR using this key. अब एल्गोरिथम इस की को यूज करके जो भी की जनरेट होगा, पेन की, ठीक है, सर्टिफिकेट साइनिंग रिक्वेस्ट, सर्ट रिक्वेस्ट जनरेट करेगा, CSR certificate signing request. However, there is an error with the configuration. Use the Terraform validate command troubleshoot and fix the issue. Error दिख रहा है VS Code के according DSA bits नाम का कोई भी attribute defined नहीं है. एक्सपेक्टेड ही नहीं है, जो रिसोर्स है ना प्राइवेट की, उसमें डीए से बिट करके नहीं आता है, स्टेट आरए से बिट आता है. बट लेट्स सी व्हाट terraform validate command says. Terraform project Shazam, project Shazam, Terraform validate. Let's see what hint it gives. Exactly, it's RS bit. ठीक है, अब ये सही हो गया. अब एक बार और वैलिडेट करके देख लेते हैं. Great. If you completed the previous question correctly, Terraform validate should have passed now Terraform. ठीक है, हम अभी डन करेंगे config Terraform plan, which will show what changes will Terraform bring after applying. तो सबसे पहले
एक ही लोकल फाइल बनाएगा की डेटा करके, जिसमें प्राइवेट की पेम होगा जो कि इस फंक्शन से आने वाला है, इस रिसोर्स से। सभी फॉर्मेट में होंगे ये। ठीक है। दूसरा है सर्ट रिक्वेस्ट CSR। CSR क्या कर रहा है की डेटा फाइल पे डिपेंड करता है। ठीक है, की पेम चाहिए इसको, की पेम इससे ले रहे हैं हम। ठीक है, इसका यूज कहाँ कर रहे हैं फिर? कॉमन इमेज डॉट इन। ठीक है, अच्छा CSR जनरेट करेंगे, देखते हैं क्या होता है। TLS पब्लिक की एंड, ठीक है थर्ड। और it's earlier it was 485। एक्सिस्ट पे करता है 0485। कैसे पता चलेगा? अच्छा मैसेज टू लॉन्ग बता रहा है। आई डोंट नो।
कैनोनिकल फॉर्मेट क्या होता है? Guys, you are free to think I'm stupid because I'm searching everything. Canonical. My English is not too good. Canonical form is a standard or normal way of representing a mathematical object or concept. कहना क्या चाह रहे हैं ये? मेन डॉट टीएफ हमारा कैनोनिकल फॉर्मेट पे नहीं है क्या? क्या वेरिएबल डॉट टीएफ यूज करना है यहाँ पे? एफएमटी अच्छा बताया था वो एफएमटी फॉर्मेट क्या किया अभी ये जस्ट कंट्रोल सी कंट्रोल वाई गॉट इट अच्छा यही करते हैं हम लोग जो ऑफिस में करते थे नाउ नेविगेट टू द डायरेक्टरी प्रोजेक्ट ए ठीक है अब हम आते हैं प्रोजेक्ट ए पे हम लोग ऑलरेडी यहाँ रिसोर्स क्रिएट कर चुके हैं टेराफॉर्म स्टेट फाइल भी हमारे पास और एक फाइल नेम है डेटा सो डेटा इज नॉट क्रिएटेड आई डू नॉट सी डेटा एनी ओके ओपीटी में ठीक है fetch detail from the state file and identify the value of the file name argument इस कैमरा मेकअप करो ना करो फर्क ही नहीं पड़ेगा क्या वेब कैम लेना चाहिए नया मेरा तो कोई मूड नहीं नया वेब कैम लेने का उसकी जगह मैं शूज ऑर्डर करके देख सकती हूँ वेब कैम इज गुड आइडिया मेरे पास कोई कंटेंट नहीं है वेब कैम लेने के लिए शूज के लिए तो है मेरे पास जगह ही जगह है 2000 के जूते In these Terraform labs, we have used multiple providers so far, but what are providers? Providers are plugins, protocol, registry. Providers are plugins होते हैं Which one is a valid subcommand for of the Terraform providers command? हम लोग mirror कर सकते हैं directly mirror और file name provide करके a new config directory provider ठीक है हम आते हैं provider के अंदर We have already run init command ठीक है इसलिए हमारे पास log.html दिख रहा है Now check the provider plugin that have been downloaded from the command line utility. ये जनरेट हुआ है
ये तो ऐसे भी दिख जाता अगर हम इनिट करते ना प्रोवाइडर। ठीक है, हम इनिट करके दिखा देते तुमको। इनिट इनिट में भी सेम ही आएगा। ठीक है, लोकल और AWS। ठीक है, ये यहाँ से भी दिख रहा था, इनिट की ज़रूरत भी नहीं थी।
Nice. Can add life cycle block under resource create before destroy. आई नीड टू चेक क्योंकि मैंने देखा है बैच के केस में क्या है पहले वो डिस्ट्रॉय होता है फिर क्रिएट होता है बट क्लाउडरा मैंने देखा कि पहले वो क्रिएट हो रहा था फिर वो डिस्ट्रॉय हो गया तो कुछ तो चेंज है क्या अभी देखो क्या मैं क्यूरियोसिटी तो हो रही है बाद में पूछूंगी तो ऐसे भी लॉगिन हो सकता है वी हैव वी GitHub I'm not sharing anything from my work right so it must be okay 88 yes so हम जाके देखते हैं एक टैब में हम ओपन करेंगे क्लाउडेरा एक में बैच ठीक है इधर नहीं मिलेगा हम जाते हैं मॉड्यूल्स में बैच क्लाउडेरा इसमें मुझे कहीं नहीं दिख रहा लाइफ साइकिल अगर हम क्लाउडेरा में देखें तो ओके क्लाउडेरा में हमारे पास मॉड्यूल्स भी है ओके इसमें EC2 भी है EC2 का मेन डॉट ये चेक कर सकते हैं हाँ गॉट इट अब समझ आ रहा है कुछ कुछ main.tf create below as one command assure ESC remote EC2 बैच के केस में ऐसा क्यों है कि ये चाहते हैं कि ऑटो स्केलिंग ग्रुप टर्मिनेट करे EC2 को और ENI को फ्री करे ओ बिकॉज हम यहाँ ENI यूज कर रहे थे ना इलास्टिक नेटवर्क ENI क्या था ENI क्योंकि यहाँ पे क्या है ना यहाँ पे आईपी सेम ही रहता है ठीक है और हमारे क्लाउडेरा सर्वर पे आईपी चेंज हो जाता है तो दिस मस्ट बी पार्ट ऑफ दैट कॉन्फ़िग यहाँ पर हम सर्च करेंगे लाइफ साइकिल अटैच ENI एज प्राइमरी इंटरफेस इन्होंने क्या क्या चेंज किया था तो ठीक है ये वाला मैं इधर करती हूँ
how to make the IP static for the AWS EC2 if it recreates. ठीक है इलास्टिक आईपी ई आई पी बट जो हम देख रहे थे वो ई एन आई था ठीक है थोड़ा वास्ट जाएगा भी टेराफॉर्म पढ़ते हैं समझ आएगी previously मैंने कंडीशन मंगवाया था 2024 में
ये शैम्पू था 1 लीटर। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, इतना बड़ा डब्बा लेके 1000 रुपए का शैम्पू। ठीक है। और ये था 180 ml। वाओ, नहीं नहीं, वाओ। हम मंगवाएंगे। ठीक है, 600 ml काफ़ी है। भाई बहुत महंगा है। हमें चाहिए सीसी क्रीम भी। सीसी क्रीम तो करना ही है ऐड, क्योंकि हम तो बिना मेकअप के नहीं रह सकते हैं। छोटा मंगवाए क्या? बैंक अकाउंट बहुत भारी हो रहा है। ठीक है, ये लाइव मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ कि जोन आउट भी हो रहा है थोड़ा, और डीएसए भी पढ़ना है। थोड़ा सा ब्रेक लेके फिर आते हैं वापस। बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय टू द नॉन एक्सिस्टेंस व्यूअर्स।